पाठ का आशय। यह कहानी सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालती है। भ्रष्टाचार के शिकंजे में हर कोई फंसा है। शायद ही कोई संस्था या व्यक्ति इस छूत की बीमारी से बचे होंगे। इसके निर्मूलन के लिए अनेक योजनाएं बनती हैं, मगर कागज में ही बंद रह जाती हैं। सदाचार सरकारी आदेशों से बाहर से थोपा नहीं जा सकता। यह उच्चतम मानवीय मूल्य हृदय की निधि है, जो हृदय से ही निःसृत होती है। इसके अभाव में सारी योजनाएं निरर्थक बन जाती हैं। लेखक ने सरकारी तंत्र, ढोंगी धर्मगुरु तथा सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी चोट की है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी देखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? वह महाराज के सिंहासन में है। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। सिंहासन में है, हो गए। कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है। वह वास्तव से दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं।
विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं। अभी यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है। महाराज लगे। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं, करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं
और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज। तावीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहां से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं। क्या तुम सदाचार का तावीज बांधकर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसा हो गया? उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। Meaning of the text. This story throws light on the corruption that is prevalent everywhere. Everyone is caught in the clutches of corruption. Hardly any institution or person would have escaped this contagious disease. Many plans are made to eradicate it, but they remain confined to paper only. Morality cannot be imposed from outside by government orders. This highest human value is the treasure of the heart, which flows from the heart itself. In its absence, all plans become futile. The author has strongly attacked the government system, hypocritical religious leaders, and government employees. There was a hue and cry in a kingdom that corruption has spread a lot. One day the king told the courtiers that the people are making a lot of hue and cry that corruption is spread everywhere. We have not seen it anywhere till date. If you have seen it anywhere, then tell me. The courtiers said, when you have not seen it, how can we see it? The king said, no, it is not like that. Sometimes, what I cannot see, you must see it. Like I never see bad dreams, but you must see it. The courtiers said, yes, we will see. But that is a matter of dreams. The king said, still, you people should search the entire kingdom to see if there is any corruption anywhere. If you find it anywhere, then bring a sample for us to see. Let us also see how it is. A courtier said, sir, we will not be able to see it. I have heard that it is very minute. Our eyes have become so accustomed to seeing your greatness that we cannot see minute things. Even if we see corruption, we will see your image in it because your face is present in our eyes. But there is a caste in our kingdom which is called experts. This caste has some such eye ointment that by applying it to their eyes, they can see even the smallest things. I request you to assign the task of finding corruption to these experts only. The king called 5 men of the expert caste and said, I have heard that there is corruption in our kingdom. But it is not known where it is. You people find it. If you find it,
catch it and bring it to us. If there is a lot, then bring a little for sample. The experts started investigating from that very day. After 2 months, they again appeared in the court. The king asked experts, "Is your investigation complete?" "Yes, sir." "Did you find corruption?" "Yes, sir." "You found a lot of it." The king extended his hand. "Give it to me. Let me see how it looks." The experts said, "Sir, it cannot be grasped by hand. It is not gross, it is subtle, invisible. But it is present everywhere. It cannot be seen, it can be experienced." The king got into deep thought. Experts said, "Experts, you say that it is subtle, invisible and omnipresent. These are the qualities of God. So is corruption God?" The experts said, "Yes, sir, now corruption has become God." A courtier asked, "But where is it? How can it be experienced?" "It is in the throne of the king." The experts replied, "It is everywhere. It is in this building. It is in the throne," he said. Saying this, the king jumped up, and the experts standing far away said, "Yes, the government is in the throne. The bill for painting this throne that was paid last month is fake. It is double the actual amount. Half the money was taken away by the middlemen. There is corruption in your entire rule, and it is mainly in the form of bribes." The king became worried after listening to the experts, and the courtier's ears perked up. The king said, "This is a matter of great concern. We want to eradicate corruption completely. Experts, can you tell us how it can be eradicated?" The experts said, "Yes, Maharaj, we have prepared a plan for that as well. To eradicate corruption, Maharaj will have to make many changes in the system. Firstly, the opportunities for corruption will have to be eradicated. Like, if there is a contract, there is a contractor. And if there is a contractor, there is bribe to the officers. If the contract is eradicated, then his bribe will also be eradicated. Similarly, there are many other things. The reasons for which a person takes bribe, this is also worth considering." The king said, "Okay, you leave your entire plan. We and our court will consider it." The experts left. The king and his courtiers read the plan to eradicate corruption. They thought over it. Days passed as they thought about it, and the king's health started deteriorating. One day a courtier said, "Maharaj, your health is deteriorating due to worry. Those experts have put you in trouble." The king said, "Yes, I cannot sleep at night." Another courtier said, "Such reports should be burnt which disturb the Maharaj's sleep." The king said, "But what should be done? You people also want to eradicate corruption." The king said, "This is a matter of great worry. We want to eradicate corruption completely. Experts, can you tell us how it can be eradicated?" The experts said, "Yes, Maharaj, we have prepared a plan for that as well. To eradicate corruption, Maharaj will have to make many changes in the system. Firstly, the opportunities for corruption will have to be eliminated. For example, if there is a contract, there is a contractor. And if there is a contractor, there is bribe to the officers. If the contract is eliminated, then his bribe will be eliminated. Similarly, there are many other things. The reasons for which a person takes bribe, this is also worth considering." The king said, "Okay, you leave your entire plan. We and our court will consider it." The experts left. The king and his courtiers read the plan to eradicate corruption. They thought over it.
Days passed by thinking, and the king's health started deteriorating. One day a courtier said, "Maharaj, your health is deteriorating due to worry. Those experts have put you in trouble." The king said, "Yes, I cannot sleep at night." The second courtier said, "Such a report should be set on fire which disturbs Maharaj's sleep." The king said, "But what to do? You people also have voices of corruption which are called call of the soul. Man works according to the call of the soul. The question is that how to suppress the voices of dishonesty coming out of the soul and bring out the voices of honesty. I have been thinking about this for many years. I have just made this amulet of morality. The person on whose arm it is tied will become virtuous. I have also tried it on a dog. If this amulet is tied around the neck, even the dog does not steal bread. The thing is that the voices of morality come out of this amulet. When someone's soul starts giving voices of dishonesty, then the power of this amulet strangles the soul and the person hears the voices of honesty from the amulet. He considers these voices as the call of the soul and is inspired towards morality. This is the quality of this amulet, Maharaj." There was a commotion in the court. The courtiers stood up to see the amulet. The king said happily, "I did not know that there are such miraculous sadhus in my kingdom. Mahatma, we are very grateful to you. You have solved our problem. We were very troubled by the widespread corruption. But we do not need lakhs, but crores of amulets. We will open a factory of amulets on behalf of the state. You become its general manager and get good amulets made under your supervision." A minister said, "Maharaj, why should the state get into this trouble? My request is that the contract be given to Sadhu Baba. He will get the amulets made by his group and supply them to the state." The king liked this suggestion. The sadhu was given the contract to make amulets. At the same time, he got an advance of 5 crore rupees to open the factory. News appeared in the state newspapers, "Discovery of the amulet of morality." A factory of making amulets opened. Lakhs of amulets were made. By order of the government, one amulet was tied on the arm of every government employee. The king and his courtiers were all happy with such a simple solution to the problem of corruption. One day, the king became curious. He thought, "Let's see how this amulet works." He went to an office in disguise. It was the 2nd of the month. He had received his salary a day before. He went to an employee and told him about some work and started giving him a 5-rupee note. The employee scolded him, "Get away from here. Taking bribe is a sin." The king was very happy. The amulet had made the employee honest. After a few days, he again went to the same employee in disguise. It was the 31st of the month, the last day of the month. The king again showed him the 5-rupee note, and he took it and kept it in his pocket. The king held his hand. He said, "I am your king. Have you not tied the amulet of morality?" "It is tied, sir, see this." He rolled up his sleeve and showed the amulet. The king was confused. How did this happen? He listened to the amulet. A voice was coming out of the amulet, "Hey, today is 31. Take it today." Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.